So once more, Namaskar. मेरा नाम नवनीत है. I belong to an organization called Astika Wellness Private Limited. We run online programs for various conditions. Okay, whether it is diabetes, blood pressure, heart issues, asthma. This webinar is about cancer. This webinar is focused on cancer. Okay. तो मैं क्यों कैमरा ऑन करने को बोल रहा हूँ? जब पता चलता है मुझे या मेरे परिवार में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो एक सवाल आता है, व्हाई मी? यस, मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, उन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं. बहुत सारे लोग तो लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा जी रहे हैं, फिर भी एक बिगड़ जाता है. दैट फियर, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं तो ट्रीटमेंट शुरू होती है, एक के बाद एक ट्रीटमेंट जुड़ती जाती है, एंड सडनली योर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ गेट्स वीक्स. ये यस और नो? हाँ, चैट में जरा बोलेंगे या मुझे थम्स अप दीजिए. ऐसी देखिए, हमारे कंट्री में इसका मतलब भी हाँ होता है, इसका मतलब भी हाँ होता है. हाँ, so give me a thumbs up or you put it in the chat box. Okay, so why am I saying? तो काम करने की मन नहीं रहता, काम करने की इच्छा नहीं रहती, बिकॉज सडनली जीने का पर्पस एकदम गड़बड़ा जाता है. हाँ कि ना? ऐसा ही होता है. ओके, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर पाते हैं, करते हैं, बट देर आर मेनी पीपल, हाँ, देर इज मेंटल, क्या बोलते हैं, डिटोरिएशन ऑफ इमोशंस, एनर्जी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, तो मैं कैमरा ऑन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? पहला एफर्ट लगाइए, हाँ, वापस लाइफ में आइए. पहला एफर्ट लगाइए, लाइफ में वापस आइए. बिना उस एफर्ट लगाए आप वापस नहीं आ सकते हैं. सेकेंडली, ओके, can we all smile without a reason? No matter what kind of cancer, no matter what stage, can we all smile? You are living despite whatever the problem is. Your body is keeping you alive despite whatever treatment you are taking or your somebody you know is taking. हाँ कि ना? है ना? आप चल रहे हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, आधों को तो देख के पता भी नहीं चलता कि उनको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है. हाँ, only that person knows, only the family knows. So you can smile without a reason. हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं. The moment you smile, even if you have whatever terrible problem, you suddenly feel better. Yes or no? Something you have done inside, so that means you can change the condition inside. हाँ कि ना? Secondly, दूसरा हम बोलते हैं थोड़ा सीधा बैठे, हाँ, बिना बैक रेस्ट के, ऐसे एकदम ऐसे नहीं, you know, comfortably straight, not just here in the webinar, but wherever, whatever else you do. So can we start with a little poll on the screen? There's a poll on the screen. So this is a common question that comes to us, which will come to us, ki I have this kind of cancer, that kind of cancer. So if you can, those who can see the poll, those who can participate in it, just participate in the poll. It'll help us set the flow of the webinar. So it basically has two questions. What kind of cancer you're suffering from? Oral, brain, throat, lungs, pancreatic, stomach, colon, any other which is not listed above, because this list can only take 10. इसमें 10 ही आ सकते हैं. Naturally, ज़्यादातर लोगों ने एलोपैथी ट्राई की है, because that is the most commonly available immediate therapy available. Some people have also tried Ayurveda because they want to look beyond. Some people have tried diet plans. Surprisingly, no, in the poll, I don't see any yoga and pranayama. Poll bhi log karte hain. That also people do. Okay. So, so we'll take just half a minute more if you can participate in the poll. Okay. Okay, so we've got a lot of inputs from everyone. Okay, we got a lot of inputs from everyone. Now, my question to everyone, is, do all these different cancers
जितने भी हैं जो वहां पे लिस्टेड नहीं है, जो किसी ने पूछा है कि व्हाट इफ एनी अदर कैंसर एंड ऑल दैट, आई एम सेइंग even if it is not listed there, my question is that yeah, people also try Tibetan medicine, huh? Other, if it for other than, no, for BP and obesity, leave your number. If you have diabetes, leave your number. If you have thyroid, leave your number. If you have asthma, leave your number. We are focusing on cancer. This webinar is for cancer and cancer only. Okay. Can I see the poll again? Can you, yes, please see the poll again. If it is possible, though we'll need to move ahead. We just asked a few questions कि किस किस प्रकार का कैंसर है, and आपने क्या क्या ट्राई किया? Majority of people naturally have tried allopathy. Then there are people who have tried Ayurveda. Some, like somebody said, they have also tried Tibetan medicine. There are other therapies also available, like urine therapy, so on and so forth. लोग try करते हैं. Essentially, when you are in this condition, you will try everything and anything. Yes, ऐसा ही होगा ना? Okay. सर, जिसने आपने बीपी एंड ओबेसिटी जहां पे रजिस्टर किया वहां से बात कर लीजिए. वी आर फोकसिंग ऑन दिस. रवि जी, ओके. सो वहां पे भी कोई कोऑर्डिनेटर होगा. ओके. तो बहुत सारी थेरेपी हम सब ट्राई करते हैं. नेचुरली फियर ड्राइव्स अस टू डू दैट. अब एक क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन मैं सभी से पूछूंगा. यस, यू हैव जॉइंड फॉर योर मॉम और फॉर योर हस्बैंड और फॉर योर फादर, इट्स फाइन. ओके. तो इन ऑल दीज कैंसर्स, जितने भी कैंसर्स होते हैं, whether whatever it is, oral cancer, whether it is stomach cancer, blood cancer, does it involve two things? One is overgrowth of cells and overgrowth of bad quality of cells. Yes or no? क्या हर प्रकार के कैंसर में यही नहीं होता है? ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स है या बैड क्वालिटी सेल्स, कैंसर सेल्स की ग्रोथ ज्यादा है? यस, बिकॉज देयर इज नथिंग कि ओरल कैंसर की सेल्स अलग होंगी, लिवर की अलग होंगी, उसकी अलग होंगी, उसकी अलग होंगी. ओके. सो all kinds of cancer, any stage of cancer is cancer. This is our first area of establishment that we need to understand. Okay. Chemotherapy is chemotherapy for all, right? Maybe it's targeted in some cases, but chemotherapy or other therapies, except for targeted medicine, it gets into, everything is put into your body, so on and so on. Okay. So cancer of any kind, any stage is cancer. Okay. So, and it doesn't matter whether you got chemo done, radiation done, so on and so forth. We are looking at a way, we are looking at something beyond that. Okay. So what is this webinar about? I'll take a few minutes of your time. This webinar is an intro webinar about an online course that you can join later on, not right now. Okay. So, okay, this is an intro webinar. ये intro webinar है. This is not the course itself. Please get it very, very clear. ये course क्यों नहीं है? Because course जो है वो 3 महीने का होता है, and it takes 6 weeks to teach you practices. So we will give you information on Kumbhak therapy for cancer problems. We'll give you information on Kumbhak therapy, how it works. And we will also take up a few common questions and answers. Course के बारे में जानकारी देंगे. Okay. So I've already asked you, does cancer of any kind include cancer cells, overproduction of cells, or growth or tumor? You have said yes. I think this is clear to everyone. Okay, so what is the problem? If we put it very, very simplistically, it is a very simplistic way of putting it. Lack of hold over cell growth. आपकी cell growth के ऊपर पकड़ कमजोर हो गई है. Okay, ये मैंने भी बोला पहले, जो जर्नी होती है डिटोरिएशन पे चलती है. आप ट्रीटमेंट लेते हैं और ट्रीटमेंट हो जाती है, फियर हमेशा रहता है. देयर इज अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ पैनिक एंड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये होता है. बहुत कम लोग होते हैं जो इससे बाहर आ पाते हैं. नाउ नो मैटर व्हाट ट्रीटमेंट यू आर टेकिंग, we are not going to discuss that. Okay, because you will try everything that makes sense to you. But एक चीज पूछनी पड़ेगी, क्या कैंसरस एनवायरनमेंट को वो करेक्ट करती है? डज इट हेल्प यू ओवरकम फियर? एंड नॉट विद टॉक
not with talk, positive thinking and positive talk. No, with actual practice that helps you overcome that. Does it help you regain body strength? Whether you are particularly people who undergo chemo, they know how weak they become after chemo. Okay, are you able to live your life like before? बिल्कुल तहस नहस हो जाती है, काम करने का भी इच्छा नहीं होती है. Are you able to do your household or office job like before? Okay, and for many people, do you even have the strength to do so many of these things like exercises, to yoga, pranayam? वो तो strength ही नहीं बची होती, physical level, mental level, emotional level पे. Okay, तो और इन सब चीजों को फाइट करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको एनर्जी चाहिए ये लड़ने के लिए, फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए. ओके, तो ये कहाँ से आ सकती है? ये कहाँ से आ सकती है? वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कुंभक थेरेपी. आई एम कॉलिंग इट ultra modern therapy for precision attack on cancerous environment. Okay, that is what we look at in Kumbhak therapy. Now, Kumbhak word, many of you must have heard in pranayam context, yogic context. Yes, आपने सुना होगा. तो कुंभक word पुराना है, yogic scriptures में भी इसका mention है, but Kumbhak therapy is brand new. It is not there in any scripture. Okay, it is not there in any text. Who has devised Kumbhak therapy? This has been done by Swami Raj Vibhu. He's a rare Kumbhak yogi, okay, and human mechanics exponent. So we have been running this program since November 2020. In between, we kind of slowed down. Now in this year, 2023, we have been running batches one after the other. So he has designed Kumbhak therapy. He's an expert on root cause determination and customized solutions. इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे. And his methods have helped many people in overcoming so-called medically untreatable problems. Okay, so क्या लास्ट स्टेज में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. अगर आप जिसको भी ये प्रॉब्लम है, ओके, अगर वो अपने ऊपर काम करने की हालत में है, कि बहुत मुश्किल काम नहीं करना होता है, आप कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के भी कर सकते हैं. बिल्कुल आप अपनी बॉडी की क्षमता बढ़ाएंगे तो बॉडी ही फाइट करती है, नथिंग एल्स. कोई और कुछ इन चीजों से बाहर नहीं आता है. ओके, सो नाउ देयर इज नो क्विक फिक्स सोल्यूशन फॉर दिस. इसका कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है. सो ओवर द नेक्स्ट 40 minutes or so, let's listen to Swami ji as to what cancer is, what is gone wrong inside the system, or what is the principle of Kumbhak therapy, how does it work? Okay, and then later on we will tell you about the course. We will also have people who have benefited from the course, both in terms of video testimonials as well as people who have some one or two of them might join here to give a live experience or share experience of what they're doing. If people are not connected with sound, please tell them to connect with audio. So have patience. It's not a quick fix solution. जब तक problem नहीं समझेंगे क्या है, तो solution ही समझ नहीं आएगा. Okay, just give me a moment, please. पहली चीज, आपको अपनी समझ में लेके आना है कि ये प्रॉब्लम क्या है. अभी जो आपको बताया गया है उसमें एक्चुअली इसका कोई कारण नहीं बताया गया. ये क्यों हुआ ये नहीं बताया गया आपको, क्योंकि ये मालूम ही नहीं है कि ये क्यों. किसी पे जिम्मेदारी डालना मनुष्य की बड़ी पुरानी आदत है, तो हम लोग हर जगह वही करते हैं. जब कुछ अच्छा नहीं होता तो ईश्वर के ऊपर सारा उसका लोड डाल देते हैं. ऐसे ही साइंस भी अलग अलग जगह अपने लोड को किसका देते हैं. जैसे साइंस, सो कॉल्ड साइंस कहते हैं, तो वो बता दे कि जेनेटिक्स में है जी आपके. ये बड़ा, ये कई लाइफस्टाइल से आया. लाइफस्टाइल क्या चीज है?
नहीं आपका खाना पीना ठीक नहीं होगा, आपका शरीर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते होगे, धूम्रपान करते होगे, हाँ, स्मोकर्स, अल्कोहल लेते होगे। पर ऐसे बहुत लोग हैं जो ये सब बिल्कुल भी नहीं लेते। जो लेते हैं उनको कुछ भी नहीं होता, जो नहीं लेते उनको प्रॉब्लम आ जाती। तो ये ना केवल जिम्मेदारी खिसकाने का तरीका है, और आपके साथ में कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता। ये बात आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो एक स्टेज आएगी समझना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आपके को जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, वट एवर यू हैव बीन टोल्ड, कोई ऐसा है जो हिंदी नहीं समझता यहाँ पे? एनीबडी हु कांट अंडरस्टैंड हिंदी? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स इफ देयर इज समबडी। अगर नहीं है तो आई विल कंटिन्यू। ओके, देन आई विल स्विच बिटवीन इंग्लिश एंड हिंदी। So when something happens to you, there are a lot of people who tell you a lot of things about it, isn't it? जब आपको कुछ होता है तो बड़ी बातें करते हैं कि नहीं लोग, इलाज भी बताते हैं, बातें भी करते हैं, सब अपनी समझदारी झाड़ते हैं। एवरीबडी टॉक्स अबाउट देयर इंटेलिजेंस एंड हाउ दे नो अबाउट दैट प्रॉब्लम, बट नोबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट प्रॉब्लम। जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा, हाँ। और लेके भी क्या करेंगे जी, आपको ठीक नहीं कर सकता कोई। नोबडी कैन करेक्ट यू, इवन इफ दे से ओके we care about you, but what can they do? If I am supposed to die this moment, anybody can give me even a 1 second of life? Nobody can give me even a 1 second of life, but everybody wants to control me in some way or the other, isn't it? Your government can't take responsibility. आपकी सरकार कोई जिम्मेदारी तो नहीं ले पाएगी। आपका डॉक्टर लेगा जिम्मेदारी, ऑलरेडी दे आर इन द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून उनके साथ में है। So your government will not take responsibility. All those scientific people who have created a mess of this world will not take responsibility. आपके जितने भी साइंटिफिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने दुनिया का बंटाधार किया हुआ है, वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वो why they are educating you? Because they get something out of you, because they are able to control your mind. Education is a way to control your mind. So whatever you are reading about cancer may not be true. So we'll see some perspective, and we'll see a perspective which is in your experience also, है ना? आपका एक्सपीरियंस तो गलत नहीं बोलेगा ना, तो आपके अनुभव में जो है उसके थ्रू समझने की कोशिश। We'll understand things pretty better, isn't it? If you feel discomfort, anybody around you, do you think anybody is able to even know how much discomfort you are facing? Nobody can sense your discomfort, but your body understands things in terms of quality, not quantity. आपका if I tell you, if I ask you, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको दुख हो रहा है क्या, you will be able to say something. Now if I ask you to create a little easiness within you, थोड़ा स्माइल कीजिए। Can you smile? क्या आप लोग स्माइल कर सकते हैं? If I ask you just smile a bit, तो आप स्माइल कर सकते हैं ना। But if I tell you your platelet levels are 8 lakhs, now get it down to 4 lakhs. What will you do? Nothing. Because you don't even have an idea that you have 8 lakh platelets or some million platelets. वो आपको मालूम भी नहीं है। So life works on, or life can be understood upon quality, not quantity. है ना? So if I tell you to create a little sweating in your body, शरीर में थोड़ा पसीना ला दें, तो आप ला सकते हैं ना? Can you do it? But if I tell you bring down your sugar level from 2, what will you do? You don't even know.
that such kind of thing exists in your body. तो आपको जीवन को पहचानने के लिए सब कुछ दिया हुआ है. You have been given everything to understand life, but you are not looking there. So you have been trained to look at life in terms of numbers. तो आपको बचपन से ट्रेनिंग करवाई जाती है कि लाइफ को नंबर्स की तरफ में देखने के लिए. एंड अल्लाह, यू कांट कंट्रोल लाइफ एट ऑल. सडनली आपकी लाइफ आपके हाथ से निकल जाती है. So if this situation comes where you can't understand any damn thing about life, either everything has to be prescribed to you, even to walk one step you need a prescription. So where has your intelligence gone? Have you become more intelligent or less intelligent? So you are all intelligent people, but consciously you have put your intelligence down. Now with that, I'll move to next step. When your intelligence is not working well, or you have not trained yourself towards creating life sense, a difficult situation comes. Will you be able to handle it better, or you will not be able to handle it? You will not be able to handle it. So first, see the game. First, your intelligence is brought down. Then whatever difficult situation we create, you will never be able to handle, and nobody will take responsibility for that. So what is difficult situation? What is difficult? So life happens because of an environment. Yes or no? Have you created life? क्या आपने life बनाया? आपने नहीं. You don't know how it happened. So there is a complete system. There is a pure system of life, creating life. So risk अगर आप create करते हैं, your intelligence level is down. If you create a risk, you'll not be able to handle it. Yes or no? Anybody for that matter. ठीक है? Now tell me, what is the first thing that you can think of which creates life? पहली चीज, अगर वातावरण जीवन दायिनी ना हो तो आप पैदा नहीं हो सकते ना. मार्स में तो पैदा नहीं हुए आप. You are not born in Mars. Why? The environment doesn't support life. So you are born on Earth because the environment supports life, or it creates life. Now 100 years back, the kind of environment we had. Today, do you think the environment is same, or we have changed it? चेंज कर दिया, पोल्यूशन कर दिया, सब इसमें जो गैसेस हैं सबका इंबैलेंस कर दिया. क्यों किया? Why? We didn't do it. किसी और ने किया, तो उसको करने क्यों दिया हमने? तो एनवायरमेंट आपका खराब हो गया, आपका इंटेलिजेंस लेवल डाउन हो गया. विल योर बॉडी बी एबल टू हैंडल इट? तो आप कितनी भी दवाई खाते रहो, आप और खराब होते जाएंगे. गारंटीड, लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए. सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्ट्रेस फैक्टर इज एनवायरमेंट. ठीक है? अब मैं आपको एक और एनालॉजी, आई एम जस्ट गिविंग यू वन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड. एक एनालॉजी दे रहा हूं मैं आपको कैंसर को समझने का. So just imagine a potter. एक कुम्हार होता है ना, मेकिंग अ पॉट. एक छोटा छोटा कटोरा बना रहा है, वो मिट्टी का, मड पॉट. राइट? नाउ he is an expert and he makes exactly the same kind of a mud pot every time. Now suddenly the person is not able to make the same kind of mud pot. What do you think? What has happened? एक जो एक्सपर्ट है वो मड पॉट अच्छा बनाता है, और सडनली वन डे ही इज नॉट एबल टू मेक द सेम काइंड.
every pot is deviated in some way or the other. Not the same size, not the same shape. Not a good pot. He'll lose a lot, isn't it? But why do you think he suddenly what happened? So for that, you need to understand how he is able to make same kind of pot. So he needs three things basically. Memory. Yes, he has to have the memory of what kind of pot he has to make. Memory आना चाहिए ना? Memory. Then the way he is working, everything should be in a balanced manner. अगर उसको टेढ़े जमीन पे लगा दें तो गड़बड़ हो जाएगा ना. There needs to be a balance of his body, of his mind, and every aspect of the ground, of the wheel. Balance, and the third thing, strength. हाँ, ये तीन चीजें आपको समझ में आ रहा है? Now let's take the first part. He has to have a memory. We call this Jnanagni. For having clear-cut memory, you need to have Jnanagni. Now you also need to see, the second part of it is, you also need to see things properly. If the eyes are not correct, he'll make wrong pots. So he has to have that memory, but he should be able to see things properly. Darshanagni. Darshanagni. This is called as Darshanagni. And then the conversion factor, it is called as Koshtagni. To convert some mud into a pot. The conversion factor or strength, it is called as Koshtagni. This is how your body also does. Create different kind of tissues. आपका शरीर भी अलग अलग tissues ऐसे ही create करता है. So what is cancer? I am coming to bare minimum, simplistic form of explanation. What is cancer? Your body is not able to make the right kind of cells and tissues. Yes or no? है ना? तो एक पॉटर अगर पॉट नहीं बना पा रहा और आप नहीं बना पा रहे सही सेल, तो what have you lost? These three things: Jnanagni, Darshanagni, Koshtagni. Do you know, when a person is suffering from cancer, it is not to blame anybody, not to point finger at anybody, but we must realize the truth. Your intelligence level is your intelligence is confused, your memory is confused. People into such situation are not able to take the right decision, and the whole world plays around it very easily. Because whatever is being told to you, you have such amount of fear that you are willing to go for any kind of therapy, treatment. Why? And who is going to establish your Jnanagni, Darshanagni, and Koshtagni? What therapy establishes that? Tell me one therapy. कैंसर के सेल को कीमोथेरेपी से निकाल देंगे ना. विथ कीमोथेरेपी यू कैन टेक ऑफ अ कैंसर और किल अ कैंसर सेल. इज दैट अ ट्रीटमेंट? नए सेल जो बनेंगे वो क्या अच्छे बना लेंगे आप? वेयर आर यू गेटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ सेल्स? आर यू डूइंग समथिंग टू क्रिएट द राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, टू क्रिएट राइट अमाउंट ऑफ राइट काइंड ऑफ सेल्स? आप अपने अंदर अच्छे सेल बनाने की क्षमता क्या बढ़ा रहे हैं? ऐसा तो कुछ है ही नहीं. ऐसा तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता दुनिया में. In this stressful situation, do you think your body will be able to make right kind of cells? आपने तो इसकी ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि सबका बंटाधार कर दिया. Then it creates
It is not able to make the right kind of pot. ये पॉटर की तो हालत ही खराब कर दी हमने, इसका स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम तीनों खराब कर दिया. Obviously it will create wrong kind of cells because suddenly it's in a confused state. I just talked about few risks, why it is happening. So we'll not go too much into it. अभी करना क्या है? Let's talk about that. अभी करना क्या है? So when you are in a confused state, what you should do? तो अभी आपको तीन बात मैंने बताया. When the potter is not able to make the right kind of pot, what should be done? उस बंदे के साथ में करना क्या चाहिए? 3 things only. तीन ही चीज करना चाहिए ना. क्या करना चाहिए? उसका रिदम pertains to memory. उसको बोलो ना अभी डिस्ट्रैक्शन मत रखो, जस्ट बी रिलैक्स, get to a state of stability. Do you remember what kind of pot you want to make? So memory थोड़ा वापस लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? But memory कैसे ला सकते हैं? Here I'll go a little ahead. थोड़ा सा आगे चलते हैं. Right? So what I'll tell you to just do a little experiment. है ना? Do a little experiment. कोई भी एक रिश्तेदार आपको हो ना, उसका चेहरा अपने आंख बंद करके इमेजिन करने की कोशिश कीजिए. किसी रिश्तेदार को pick up a name and try to bring in the face in your mind. उसका चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए. Try to do it. आंखें बंद कीजिए. Try to pick up one familiar person or a friend. While trying to bring the face in your mind, how you keeping your body? वापस से सुनिए. While trying to bring the face in your mind, जब आप उसको याद कर रहे हैं, तो अपने शरीर को कैसा रखा हुआ आपने? You make your body still, yes or no? Why are you making your body still? To remember something. Because this is the mechanism of memory. इसके लिए आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है. Everything is happening here. You just notice it. If you keep yourself still, if you are still, your memory is clear. If you are not still, you are confused. So that is why. ये भी अभी मैं बता रहा हूं, इतना एक्सपेरिमेंट कर सकते. You can do lot of experiments. Get into a moving vehicle. जो व्हीकल बहुत हिल रही है ना, वहां पे याद करने की कोशिश कीजिए. आपको याद नहीं आएगा. उस समय आप बचाएंगे अपने आप को. You'll just try to protect yourself. It's a risk. तो आपको याद नहीं आएगा. So are you doing anything to make yourself still? आप तो इलाज कर ही नहीं रहे ना अपना. You are not treating yourself and you are just dreaming that I'll come out of this problem. ये तो practical नहीं है साहब. This is not practical. So how do you make yourself still? Now come to this. Practically, how do you make yourself still? I'm giving you method also. Actually, that's what the program is all about. I'm giving you the crux of the program. We are going towards reversing cancer. The only question is the kind of momentum that it has gathered in your body, how much time you will take to reverse it. But at least one step has to be taken. For few people,
their state has come to such, or the momentum of disease has come to such state where they will not be able to reverse. But let me give you a guarantee, you will be able to extend your life. क्या क्या बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि आप 100 साल जिएं, मगर अगर आपकी लाइफ में एक दिन भी हम बढ़ाते हैं और वो एक दिन भी बड़े सुंदर से जी पाते हैं, दिस इज वॉट इज ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट. बिकॉज मेनी थिंग्स यू नॉट बी एबल टू करेक्ट. एनवायरमेंट को ठीक कर देंगे क्या? ये जो पिछले 20, 30, 40, 50 साल का केमिकल कर्मा को ठीक कर देंगे क्या? Will you be able to change the whole quality of food that you are consuming? No. We have come a very long distance where we'll not be able to reverse everything in a short amount of time. थोड़े समय में ये सब नहीं कर पाएंगे, मगर ये तो इंश्योर कर सकते हैं कि we don't live a very very difficult life. At least we can ensure कि हमारी जो लाइफ है वो सुंदर हो जाए. ये भी मैं आपको बता रहा हूं, it will get extended. Some people will be able to extend it by 10 years, 20 years. Some people will be able to extend it by 10 days. But what is important? Those 10 days will be very beautiful. Your body will have the strength to conduct life properly. ये कर सकते हैं. तो हाउ डू यू होल्ड योर सेल्फ स्टिल? अपने को स्थिर कैसे रखते हैं और उसको स्थिरता बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? सो क्लोज योर आईज, क्लोज कीजिए और इमेजिन योर सेल्फ ऑन अ टॉप ऑफ अ स्मॉल हिल. एक पहाड़ के ऊपर है. आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए एक पहाड़ के ऊपर. नाउ एट अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पे कोई इंसान खड़ा हुआ है. आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा कि वो इंसान कैसे, कौन है. अब आप उसको पहचानने की कोशिश कीजिए. तो दो चीज आप अपने शरीर में कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कीजिए. अपने शरीर को स्थिर कर देते हैं और सांस को रोक लेते हैं. सांस धीरे हो जाती है और रुक जाती है. अगर नहीं रोकेंगे सांस को तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे. नेचुरली ये हो जाता है. इट हैपेंस नेचुरली. ओपन योर आइज, आंखें खोलें. So to make yourself still, what mechanism you use? You hold your breath unknowingly. आपकी सांस धीरे जरूर हो जाती है. This everybody can notice. And if you hold it a little, if it goes low and hold it a little, you are able to focus, see things more clearly, recognize things more easily. तो आपने स्टिलनेस को कैसे बढ़ाया? मैकेनिज्म क्या था? आपके बॉडी का मैकेनिज्म. व्हाट इज योर बॉडीज मैकेनिज्म टू मेक योरसेल्फ स्टिल? होल्ड योर ब्रेथ. आई टेल यू मोर थिंग. कितने लोग होंगे जिनका दिमाग ही नहीं रुकता? भागे जाए भागे जाए भागे जाए. इट्स जस्ट रनिंग हियर एंड देयर. आप जरा सांस रोक लीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए. मुश्किल हो जाता है. बाकी छोड़िए, इट्स वेरी इजी. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. मुंह खोलो, सोचने की कोशिश कीजिए. नहीं सोच पाए, मुश्किल हो जाता है. कितनी भी किताबें पढ़ लो, माइंड नहीं रुकता. बस छोटे से काम से रुक जाता है. So you need to understand how this body functions. शरीर काम कैसे करता है?
if you practice holding your breath in a particular manner, don't you think your memory will get reestablished? Your stillness, stability will get reestablished? I am one example. मेरी मेमोरी तो मुझे मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे घटिया मेमोरी मेरी मेमोरी. It is because of Kumbhak. It got established. Today, whatever I'm talking in front of you, there is no script. I never talk with script. तो सडनली ये कैसे हो गया? 5 मिनट पहले आप मुझे जो बोलोगे मैं याद नहीं रख पाता था, और आज मुझे वो भी याद है जो आपने पहली बार क्या बोला अगर आप मिले मुझे तो के लिए. So if you are disturbing the fundamental step, metabolism, first step of metabolism in your body, there are 6 different levels of metabolism that happens in your body. 6 metabolism होते हैं, and there are 7 different kinds of tissues that are made in your body. रस, I'm telling you the generic category. मैं category बता रहा हूँ. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are quality of tissues that are created in the body, and for that you need 6 different strengths and balance of regeneration and degeneration. So what do you need? 6 strengths in your body. क्या क्या strength चाहिए आपके body को? देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल. छह बल चाहिए ना? Within the body, if you have to activate any trigger point, you don't have any other option but कुंभक. आपके पास कोई और तरीका ही नहीं है. So if you think by eating the right kind of food, you will be able to enhance those balas? No, not necessarily. Your body will obviously try to recover a little, but the kind of damage that has happened will not be able to recover beyond a certain threshold. For that, you need to support your body. आपको अपने शरीर को support करना ही पड़ेगा. So you will have to increase these balas. Balance कैसे create करते हैं? Of regeneration and degeneration. कैसे create करते हैं? By holding your breath. You are creating a balance of your body by holding your breath, and thereby your body also creates balance of regeneration and degeneration. If you have that breath hold factor very strong, only then your degeneration, regeneration, your hormonal balance, the balance of functioning, the balance of input and output in your body, detox factor भी जैसे आता है उसके अंदर एक, those will get established. तो बैलेंस करने के लिए भी कुंभक. स्ट्रेंथ, थर्ड थिंग इज स्ट्रेंथ. 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. रिदम, बैलेंस, स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ आप कैसे क्रिएट करते हैं? हाउ डू यू क्रिएट स्ट्रेंथ इन योर बॉडी? सो ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं, वेरी सिंपल एग्जांपल. जस्ट पुश योर लेफ्ट पाम विथ योर राइट फिस्ट. टाइम हथेली से बाएं पाम को पुश कर, जोर लगा. स्ट्रेंथ, जोर लगाएं जरा. हाउ डू यू क्रिएट स्ट्रेंथ? पुश कीजिए. ट्राई टू डू इट. एक्सपेरिमेंट तो करो कम से कम. पुश इट जोर से. व्हाट डू यू डू टू पुश? हार्डर. होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? You create strength by holding your breath. Either push or pull or jump, you do breath hold behind. You lift a weight, एक कोई weight उठाइए, you hold your breath. To create strength, you hold your breath. If you do not have strength, what have you lost? Breath hold factor. Simple terms में बात कर रहा हूं. I'll make you understand कुंभक a little bit more. So 3 चीजें आपको स्टैब्लिश करना है तो कुंभक को इस्तेमाल. ब्रेथ होल्ड, अभी फंडामेंटली हम बात करते हैं, ब्रेथ होल्ड को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा. फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग, ब्रेथ होल्ड इज कुंभक.
breath hold is also Kumbhak, but Kumbhak is much more than that. So the ability to hold memory in the body also happens through Kumbhak. The ability of focus also happens through Kumbhak. Shabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha, these qualitative factors have a Kumbhak base to them. इसको समझाने के लिए और दूसरे तरीके से समझाता हूं. You always need two things for any dynamic activity in the body. शरीर में किसी भी काम करने के लिए आपको दो चीज चाहिए. जैसे चलने के लिए, if you walk, you push the earth and walk. है ना, आपका सेंटर ऑफ मास और अर्थ, पृथ्वी, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं. कैसे? यू पुश अर्थ एंड दैट्स हाउ योर सेंटर ऑफ मास वॉक्स, गोज इन फ्रंट. दो चीज चाहिए आपको काम करने की. यू गो इन स्पेस, स्पेस में जाएं, वहां पे चलने की कोशिश करें, ट्राई टू वॉक, यू विल नॉट बी एबल टू वॉक, बट यू विल बी एबल टू मूव योर हैंड्स एंड लिम्स. अपने हाथ पांव को हिला पाएंगे. सो फॉर मूविंग योर हैंड, व्हाट आर यू यूजिंग? यू आर अगेन यूजिंग द सेंटर ऑफ मास. So this is called as Sahita Paksha of Kumbhak. You use two things, always two things. Even to remember, you use two factors. So if you are holding your breath, you always use the center of mass of your body, but you are doing rapid breathing. Try to do rapid breathing. तेजी से सांस ले छोड़ें. आप अपने शरीर का सपोर्ट लेते हैं ये करने के लिए. You hold your body somewhere, if you observe your body, to do rapid breathing. So you are doing Kumbhak. When you are holding your breath, you are doing Kumbhak, but when you are doing rapid breathing, then also you are doing Kumbhak. So any dynamic activity, if your heart is functioning, there is a Kumbhak mechanism to it. If your liver is functioning, there is a Kumbhak mechanism to it. If your kidney is functioning, there is a Kumbhak mechanism to it. If you strengthen those Kumbhak mechanism by enhancing these 6 balas in your body, then what you can see is the efficiency of your organ function, the health of your organ, ये improve हो जाएगा. Regeneration, degeneration, you can balance. But ये sudden नहीं होता that you do it and it happens. No. The balance that you are trying to get to will get created in a certain amount of time. जैसे आम का फल अगर चाहिए तो 5 साल वेट करना पड़ता है. आम लगा के आम का बीज, है ना, 5 मिनट में चाहोगे तो क्या हो जाएगा? वो आपको बीमार कर देगा आम. और हम यही कर रहे हैं ना, हमको 5 मिनट में आम चाहिए ना. Genetically modified food. We are changing the time constants of the world. दुनिया में जिस गति से जो काम होता है उसको हमने बदल दिया, तो आपके शरीर में जिस गति से काम हो रहा है वो बदल जाएगा और रिजल्ट्स बदल जाएंगे, तो हेल्थ की जगह में प्रॉब्लम आ जाएगी. तो कुंभक इज अ डायनामिक मैकेनिज्म जहां पे डुअलिटी, इसी को डुअल वर्ल्ड कहते हैं, इसी को डुअलिटी कहते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एज डुअलिटी. सहित कुंभक, फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑन विच द यूनिवर्स फंक्शंस. Behind that, there is something called as Kaivalya Kumbhak, which we call as Shiva. Shiva. Shiva Tattva. ये शिव तत्व के ऊपर सहित कुंभक आता है. शिव इज कैवल्य कुंभक. डुअलिटी जो है सिंगुलरिटी के ऊपर आती है. सिंगुलरिटी इज शिव तत्व, डुअलिटी इज शिव शक्ति. और वही कुंभक मैकेनिज्म है जिसपे कोई भी काम, कोई चीज काम करती है. तो उसी को हम इस्तेमाल, इट इज योर बॉडीज ओन मैकेनिज्म टू फंक्शन. उसी को फंक्शनल मैकेनिज्म को वी आर यूजिंग दैट फंक्शनल मैकेनिज्म टू इंप्रूव द हेल्थ फैक्टर्स ऑफ दिस बॉडी. दिस इज अ मस्ट. दिस कैन ओनली हेल्प यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. नो मेडिसिन, नो फूड, नो अदर थिंग कैन हेल्प यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम.
Even if you are taking all those things, we are not telling you to stop them. हम क्यों नहीं कह रहे कि उनको रोक दीजिए, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शन नहीं है शायद. So what we are saying is, even if you are doing that and your body is taking the brunt of that, उसका नुकसान झेल रहा है, उसका साइड इफेक्ट झेल रहा है, उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन झेल रहा है, एडवर्स फूड रिएक्शन, इसकी तो बात हम करते ही नहीं है आजकल. So whatever adverse reaction that you are getting out of those things, adverse environmental reaction, इसको कौन बचा पाएगा? आप जितना झेल पाएंगे उतने बचे रहेंगे, नहीं झेल पाएंगे क्रैश हो जाएगा. तो अपनी झेलने की क्षमता तो बढ़ा लीजिए. It is very, very urgently important. So we spent the last 40 minutes trying to understand the principle of Kumbhak. Somebody is getting impatient. If you want to get into Kumbhak therapy, first quality you need is patience. It is not going to get cured overnight. Okay. It has worked wonderfully well for some people. Some of them are here. Cameras off ho gaye. Would you like to hear experiences of people who have benefited from the therapy? And then we'll go ahead and talk about the program. Give me a yes in the chat box. I'll play a short film. Somebody asked, is it viable? Is it work? Huh? So there is a live participant also, but for that people need to have patience. Okay, I can see 2 participants from our program, but let's play this video first. This is a short video. Thank you so much. I just want to thank you. And as sharing the experience of my father, like he was diagnosed in 2022 last year. तो उसके बाद फिर ऑपरेशंस हुए, ऑपरेशन के बाद फिर पोस्ट ऑपरेशन जो हुआ कीमोथेरेपीज हुई, फिर काफ़ी मतलब 2-3 कीमोथेरेपी के बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे. इन द सेंस आईसीयू तक में एडमिट करना पड़ा था बिकॉज ऑफ वीकनेस एंड ऑल. फिर उसके बाद हमको मतलब पता चला कि कुंभक थेरेपी भी एक चीज़ है which can go hand in hand with the already whatever the medical treatment we are doing. तो फिर इसके बाद हमने बात करी इंटरनली घर पे. फिर आज आप रिजल्ट देख रहे हैं पापा, जैसा कि आपने बताया, मतलब ही नाउ सिटिंग स्टेट. फर्स्टली काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे और खाना बिल्कुल मतलब काफ़ी कम हो गया था. तो अब एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है. और अभी रिसेंटली गुड न्यूज़ इज दैट एक ट्यूमर मार्केट टेस्ट हुआ था इन विच जो एक साइज था 4x3.8 से वो रिड्यूस होकर 0.8x1 हो गया. एंड दैट टू इट इज इनएक्टिव नाउ. So we can say now, I mean, he's completely fine now, and all thanks to you, and all thanks to especially you, I can say, because हमारा जितना भी आपसे इंटरेक्शन हुआ है, पेशेंटली आपने सबका सुना है, सबके जवाब दिए हैं. यूजुअली क्या होता है, बहुत से लोग इरिटेट हो जाते हैं, बट दैट इज नॉट व्हाट गुड पहचान ऑफ अ मेंटर. बट आपका सेशन अटेंड करके स्पेशली आपके साथ जिस आपने पर्सनली सब पे ध्यान दिया है, तो दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट. तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन आता है और उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है. तो आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट. एंड दो आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, बट स्टिल आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस इनडायरेक्टली. तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा ये. मतलब when I was diagnosed with cancer in 2023 January, I just refused that I don't want to take chemotherapy. But it is very natural that everybody is afraid, so they did not agree to me. So I took 4 therapies, and my liver and my heart were severely damaged because of the chemotherapy, not because of cancer. Cancer is not there in my heart and my liver. Then they realized that no, the doctor, I mean, one of the fortunate doctors that no, we cannot give her more chemotherapy. And that is when I joined Kumbhak in July. I took my last chemotherapy in May. For June, I was hospitalized for 15-20 days severely. I could not get up. I joined Kumbhak in the first week of July. And after that, I have stopped all my medication. And I am feeling so comfortable from within, so energetic. I'm able to work well. I'm able to spend the whole time. I'm able to do, live my life as I was living in the months of November, December 2022. So I am very, very happy with the practices that I'm doing. So this has rejuvenated me strongly.
I am able to deal with a lot of situations with a lot of patience and a lot of मतलब बहुत शांति से चीजों को समझ करके करने की थोड़ी बहुत I can see that around. I'm not reacting easily. कोई भी मेरे सामने कुछ बोल देता है, मुझे कुछ बोल देता है, तो मैं बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर रही हूँ अभी। जो सबसे मेजर मेरा ड्रॉबैक था कि मैं आई वाज वेरी रिएक्टिव। तो these are some things that I find the change in me, और मैं डेली इस प्रैक्टिस को I'm enjoying this practice a lot. फेब्रुवरी में सर्जरी की थी और उसके बाद मेरे को बहुत भयंकर वीकनेस थी, पता ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं रिकवर हो पाऊंगा कि नहीं, मतलब रनिंग तो लगता ही नहीं था मुझे कर पाऊंगा। बट ये ज्वाइन किया मैंने कोर्स और अभी 12-13 किलोमीटर तो मैं रन कर लेता हूँ इजीली। 21 टारगेट है मेरा, वो भी हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर वहां पहुंच जाऊँ। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। एक तो बिहेवियर बहुत खराब हो गया था मेरा ये होने के बाद, ऑफिस में किसी पे भी गुस्सा करना वो सब एकदम चला गया और काफी शांति लगती है, बहुत अच्छा लगा। जो कस्टमाइज प्रैक्टिस है वो अवरली तो नहीं कर पाता मैं, छूटी जाती है बहुत कोशिश करने के बाद भी, बट वो 5-6 बार से ज्यादा नहीं होती है। बोला था कि मेरे मेमोग्राफी और वो हुआ तो उन्होंने कहा एक बार वो बायोप्सी करा लो। तो मैंने उसके लिए नहीं थी क्योंकि मेरे को ऐसा कोई ज्यादा नहीं थी, पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये मैंने ज्वाइन कर लिया। आप मानोगे वो मेरी चीज श्रिंक हो गई है, वो मतलब बड़े पैसे बिल्कुल छोटा सा हो गया है। और मुझे ये लग रहा है कि एक कंटिन्यूशन में रहेगा तो ये बिल्कुल, अपने को मैं बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ। वैसे भी कुछ ऐसा नहीं था, पर आपके साथ लग के मेरे को अभी बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है और मुझे लग रहा है वो धीरे 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 श्रिंक हो रहा है। और मैं रोज विजुलाइज करती हूँ कि वो खाली हो जाना है, खत्म हो गया। और रोज ऐसे फील से घूमती हूँ कि मेरे को कुछ नहीं है। सो मैंने वो बायोप्सी नहीं कराई। उन्होंने कहा डाउट है, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना जी। हम्म। तो कैसे करें, कैसे करते हैं? हाँ, कैमरा ऑन करें। क्या कुर्सी पर बैठ सकते हैं या जमीन पे बैठ सकते हैं? हाँ, नहीं मैं कुछ करा नहीं रहा हूँ, किसी ने बोला कैसे करते हैं। क्या आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं? जो जमीन पे नहीं बैठ सकता वो कुर्सी पे बैठ सकता है, हाँ कि ना? आप कुंभक कर सकते हैं। अब मैं बोलूं, एक नाक से सांस अपने एक नॉस्ट्रिल ब्लॉक कीजिए, दूसरे से सांस लीजिए एक पर्टिकुलर नंबर में, ओके, और उसको होल्ड कीजिए थोड़ी देर, जितना आपसे होल्ड हो सकता है। दूसरे नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल दीजिए, हाँ, या एक से इनहेल कीजिए, थोड़ा रोकिए और फिर निकाल दीजिए दोनों नॉस्ट्रिल से। आप कर सकते हैं? कैन यू डू? yes or no? Give me something. So you can do Kumbhak, okay? Even if you are able to sit on the bed also, अगर आप बैठ भी पाते हैं तो आप कुंभक कर सकते हैं, ओके? इसमें कोई ज्यादा मेजर वो ऐसी चीज नहीं होती है कि खूब शरीर को हिलाना है और बहुत सारी तगड़ी एक्सरसाइज करनी है, ऐसा नहीं है। सो कुंभक कैसे करते हैं? इट कैन बी डन सिटिंग ऑन द बेड, इट कैन बी डन सिटिंग on the flat surface, okay? It involves using one breath hold, focus, and in some practices sound also, okay? ये कुछ हमने आपको postures दिखाए हैं। और जो कैंसर प्रोग्राम है उसकी प्रैक्टिसेस, बिकॉज कैंसर एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता है, तो उसकी प्रैक्टिसेस इस तरह डिजाइन की गई है कि सिंपल प्रैक्टिसेस से बहुत सारा चीजों पर काम किया जा सके आसानी से, ओके? तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम योगा एंड प्राणायाम? योगा प्राणायाम में हर कोई एक जैसी प्रैक्टिस करता है। सूर्य नमस्कार इज सूर्य नमस्कार फॉर एवरीवन, यस? सो इन दिस प्रोग्राम also they are not designed specifically for chronic conditions. Definitely उनको करने से आराम मिलता है, हम उसमें कोई नो डाउट नहीं है, बट उसमें कोई रूट कॉज डायग्नोसिस नहीं होता है। देयर इज नो कस्टमाइजेशन। व्हाट इज कस्टमाइजेशन? ओके, सो द प्रैक्टिसेस दैट यू आर टॉट, they are changed as per the system. ये कैसे होता है? ओके, तो पहले मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस आंसर कर देता हूं, देन आई विल टेल यू इन डिटेल्स। Can cancer of any kind and stage be handled with Kumbhak therapy? Yes. Cancer किसी भी प्रकार का हो, किसी भी स्टेज का हो, it can be handled with Kumbhak therapy because one needs to fix the cancerous environment. Okay, and that is what the therapy works upon. Can you do regular treatment like chemo etc. with Kumbhak? Yes, you can. We don't interfere. हम नहीं मना करते, कोई भी ट्रीटमेंट आप जो भी कर रहे हैं आप
आप कर सकते हैं. In fact, Kumbhak is the only practice that will help you fight the weakness caused by chemotherapy, especially. Okay. Usually chemotherapy लोग कराते हैं तो 5 से 10 दिन तक एकदम बिस्तरे पे पड़ जाते हैं. But when people start doing Kumbhak therapy, they are able to get up on the very next day or in the very shortest time. Okay. मुझे डॉक्टर ने बोला है सर्जरी कराने को, क्या मैं सर्जरी अवॉइड कर सकता हूं और कीमो? सी, अगर ग्रोथ या जो भी आपका पेन है बहुत ज्यादा है, सो वी विल से कि आप सर्जरी करा लीजिए, बिकॉज यू मे नॉट बी एबल टू हैंडल द पेन. बट इफ यू कैन बेयर द पेन, गिव योर सिस्टम अ चांस विद कुंभक. ओके. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट बेटर? It varies, like Swamiji also said, it varies from person to person. It depends on the momentum of the disease. आपके अंदर शरीर में कितनी बड़ी हुई है और जो ट्रीटमेंट है उसका क्या इफेक्ट है, उसका भी फर्क पड़ता है, और आपकी करंट हीलिंग स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है. The good news is majority of the participants feel the difference in 3 months. Okay, ये difference आपके symptoms में हम बात कर रहे हैं. How you feel energy wise, how you feel in terms of sleep, how you feel in terms of digestion, so on and so forth, pains. So some benefits reported after 15 days of practice. Now, these are benefits reported by participants. We are not saying ये हर किसी के लिए 15 दिन में ही काम करेगा, कुछ लोगों के लिए ज्यादा लंबा समय भी लग सकता है. So like one son shared that his father पहले बैठ ही नहीं पाते थे, अब सीधा बैठ पाते हैं. जॉइंट के फंक्शंस इंप्रूव हो गए हैं. कुछ लोगों को सर्जरी के बाद नंबनेस आ गई थी अपने इसमें बॉडी में, वो वापस आ गई है. वन ओरल कैंसर पेशेंट जिनके एकदम यहाँ से सेंसिटिविटी गायब हो गई थी, that has come. Okay, blockages, ears or nose or throat में blockages थे, that has come. You also heard an athlete कि उसका तो भागना बंद हो गया था, बट अभी वो 12-13 किलोमीटर दौड़ रहे हैं. कुछ लोगों के ब्रिटलनेस ऑफ नेल्स जो इम्पैक्टेड होते हैं थेरेपी से, वो भी गायब हो गया है. Okay, and most people get more energetic to manage activities on their own. So, एक थोड़ा सा अपने बारे में भी बता देते हैं. We are Astika Wellness Private Limited. Our website is astikakumbhak.com. We are registered in Startup India. Our courses are designed by Swami Raj Vibhu. We run many programs. This particular webinar is for cancer. Okay. So, what is the course? The course is Kumbhak Therapy for Cancer to strengthen the body to reverse the cancerous environment. Okay. जब तक cancerous environment करेक्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, चीजें बार बार आती रहेंगी. इसमें हम आपसे कोई एक्स्ट्रा मेडिकल टेस्ट नहीं मांगते हैं, ना एक्सरसाइज करने को बोलते हैं एक्स्ट्रा, ना कोई डाइट प्लान है. वी टॉक अबाउट फूड एंड वाटर, बट देयर इज नो डाइट प्लान. What do we teach? We only teach Kumbhak practices. We make flexible lifestyle suggestions, and we also give you ways to break the pattern of the disease and the strength to fight the effects of current chemical treatment. Okay, 3 चीजें जो हम फिक्स करते हैं: ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि. उसके अलावा मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम किया जाता है, इम्यूनिटी के ऊपर काम किया जाता है, and to re-establish the natural cycle of the body. So it is not just breath hold practices. There are many more things that are covered under this. Okay. जर्नी क्या होती है? सबसे पहले तो आपके सिस्टम को ही तैयार किया जाता है. बहुत सारे लोगों में बैठने की, कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती है. So we first prepare your system over a week or 15 days. Okay. Then you learn basic practices. Okay. Then you learn advanced practices. Then there is something called a Pran Shakti diagnosis and customization that happens. Then a small evening practice is also introduced, and we also review individuals को भी review करते हैं अलग-अलग slots में कि उनकी practices कैसे चल रही हैं. We also give you lifestyle challenges to overcome psychological and physiological barriers, and later small hut Kumbhak practices for physical and mental agility. So 2 pillars of Kumbhak therapy ये क्या है? One is Pran Shakti diagnosis, the other is customization. Pran Shakti diagnosis क्या है? It is a non-medical diagnosis for root cause determination. 84 aspects आपके होते हैं जो शरीर चलाता है, शरीर को चलाते हैं. उनमें से कौन सा वीक हो गया? We focus on 4-5, and that helps us identify the weakest aspect. ये क्या है? क्या इसमें कोई टेस्ट इन्वॉल्व है? नहीं. These are simple questions and observations about your system. अपने सिस्टम के बारे में आप ही सबसे ज्यादा जानते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, आपकी फिजिकल
ability क्या है, okay? Based on this, okay, what happens is जो आपको practices सिखाई जाती हैं उनमें change लाया जाता है, so customization happens. This is as per a system, every individual system, okay? तो आपको तैयार किया जाता है and then customization happens. So this is what sets the therapy different from other therapies, okay? तो क्या customization, जैसे मैंने बोला, एक साथ नहीं होता है. Over 6 weeks, system is prepared in a step-by-step manner, okay? And once you get familiar with the practices, then change is brought about in them, and then you are able to do that easily. कमिटमेंट एंड पेशेंस चाहिए. कितना चाहिए टाइम लगेगा इसको आपको करने में? कोई आपको 4-5 घंटे प्राणायाम या कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है. You need 30 to 40 minutes in the day. Is that fine? 30 to 40 minutes one can manage for oneself. Okay? तो आप ठीक होंगे तो बाकी सब ठीक होगा. अगर आप ही ठीक नहीं होंगे तो बाकी सब ठीक कहाँ से होगा? तो प्रोग्राम का ड्यूरेशन कितना? ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन है, क्योर का ड्यूरेशन नहीं होता है हर किसी के लिए. प्रोग्राम ड्यूरेशन इज 3 months. Wherein you get 3 main learning classes and 13 practice sessions. Okay. What can you expect in this 3 months program? You can expect noticeable improvements as reported by participants. One is better digestion, better sleep, better mental state and energy levels, harmony in the system, reduced pains that come with cancer, especially after surgery, faster recovery from chemo treatment, stronger immune system. And some of you might also experience reduction in oral drugs and injections used, okay? And you will also improve, see improvements in your CBC and blood chemistry reports, okay? तो क्लास कहाँ पर होती है? ये ऑनलाइन है, ये Zoom पे होती है, so they can be attended through laptop or mobile. So एक वाईफाई कनेक्शन और Zoom के साथ familiarity होना अच्छा है. ये सेशंस लाइव होते हैं, ये बैचेस में होते हैं, in which we use videos as well as live instructors. The session are conducted in English and Hindi. English और हिंदी में होते हैं. Session recording जो main session की है वो सबको उपलब्ध कराई जाती है जो भी प्रोग्राम में participate करेगा. Instructions are also shared in English and Hindi. So 1/3 pillar of our program is the class mentor support. These are the people who watch you in the class. They conduct practice sessions. They clarify doubts. आपको एक class WhatsApp group में जोड़ा जाता है wherein you can ask your questions 11 to 1 PM and 5 PM to 7 PM via phone calls, video calls. So it is not just teaching of practices, it is also hand holding of people who join the program. So online class है, क्या मेरे ऊपर ध्यान दिया जाएगा? जी. Every seat in an online class is a frontline seat because we can focus on individual participants by enlarging the screen, so on and so forth. Okay, and individual review of practice if needed is also done. ये भी होता है, अपना time slot आप fix कर सकते हैं. And a lot of people join for their fathers and their mothers or somebody elder in the family or somebody who's very weak. So they also join as attendant. So we also handhold the patient as well as the family. And the group mentor is available 12/7, not 24/7, 12/7. Okay, so again, classes online होती हैं. Class sessions are not held every day. They are as per a schedule. Share किया जाता है schedule आपसे advance में. Class time क्या होती है? सुबह 7 बजे main sessions की. Duration क्या है? 60 minutes plus questions and answers. Practice sessions सुबह 7 बजे और बाद में कुछ समय के लिए 5 बजे भी होते हैं. That we ask the participants कि वो 5 बजे आना चाहेंगे या 7 बजे आना चाहेंगे शाम को. Duration is less than 60 minutes plus Q&A. Class recordings and instructions are provided. Practice sessions are not recorded because we practice what we learned in the main class. Okay. Now will come a question of how much does it cost? Yes, cancer is not a sasta disease. We have already spent a lot of money on that, and it is not breathing technique that we are teaching. Okay. So the next batch will start on Wednesday, October 18, 7 AM. Okay, practice classes are held on other days as per a schedule, which we will share. Okay, what is the fee for this program? The fee for this program is 21,000 rupees. They can be paid in installments, so you can pay half now, like 11,000 now and 10,000 before week 5. Okay, what are you? This is a scan. We will also share payment details in the WhatsApp group, so on and so forth. Okay.
What are you paying for? You're paying for root cause diagnosis, customization, daily tracking, access to videos, instructions, mentor support, all the main and practice sessions, and most importantly, knowledge and practices that you won't find anywhere, and practices that will, the only practices on this planet that will actually help you correct the cancerous environment. जब तक cancerous environment ठीक नहीं होगा, cancer नहीं जाएगा. Okay, these are our numbers. Should you wish to reach out to us, okay, these are our numbers. These numbers will also be shared. Okay, so this is about the program. There'll be questions, etc. So if somebody is in a hurry, you can leave a lot of, you can leave your numbers, okay? And also there's a feedback form being shared over here. Do fill this up, okay? So कुंभक थेरेपी करानी है, कैसे करें हमने बता दिया. आप कर सकते हैं कैसे, आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, okay? So people who have more questions, please stay here. We will take some of the questions over here, okay? And yes, many people have also said that call me at this time or this time. We will reach out to you at that time. Swamiji is here. So we will take a few questions from him, okay? You can post your questions, but just remember, we'll not be able to address all the questions over here, okay? So just post your question and we will take. Amit ji, post your question, okay? Or unless you want to unmute yourself and ask. Yeah. Ask yourself, unmute yourself and ask. Please ask. Okay, there's a question from somebody else. I am fighting 4th stage cancer detected in liver, pancreas, and lungs. Have completed 43 chemo sessions. Please advise personally for me to explore this. Just give me a moment. I'll repeat the question. Just give me a moment.